Good morning, student. Today we will study the first chapter of physics of class 9th, that is motion. First of all, we have to understand what is motion. So, when we say that any object is in motion, when an object changes its position with respect to time with their immediate surrounding, then object is said to be in motion. What? When an object changes its position with respect to time with their immediate surrounding, then the object is said to be in motion. So, and the next term is rest. When an object does not changes its position with the passage of time, with respect to their immediate surrounding, then object is said to be in rest. So, when an object does not changes its position with the passage of time with respect to their immediate surrounding, then object is said to be in rest. मतलब कि जब कोई व्यक्ति वस्तु अपना स्थान या पोजीशन नहीं बदलता है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स के तुलना में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में बोलेंगे, और यदि वो बदलता है तो हम उसे मोशन में बोलेंगे. एंड दीज टू टर्म्स आर रिलेटिव टर्म्स. एक ही ऑब्जेक्ट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्ट में हो सकता है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ए पैसेंजर व्हेन मूविंग sitting inside the bus and you are outside the bus standing beside the road. When the bus passes, then according to you, bus in motion and the passenger is also in motion. But when an passenger, when you sit inside the bus, then according to you, the same passenger is in rest. Why? Because according with respect to you, that passenger is not changes its position. That's why the passenger is said to be in rest. मतलब कि आप जब बस के अंदर बैठ गए तो वो पैसेंजर का जो पोजीशन था वो बदल नहीं रहा था पासेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वो आपके लिए रेस्ट में हो गया. लेकिन जब आप बस से बाहर थे तो वो आपके तुलना में उसका पोजीशन बदल रहा था, तो आपने उसे मोशन में कहा. यानी सेम सिचुएशन को अगर हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो वो एक के लिए रेस्ट और दूसरे के लिए मोशन हो गया. इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं. सो अगेन, नाउ वी हैव टू नो देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्वांटिटी. वन ऑफ देम इज वेक्टर क्वांटिटी एंड अनदर इज स्केलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. द क्वांटिटी which have both magnitude
as well as direction is called vector quantity. Example, displacement, velocity, it is. Another unit is scalar, the quantity which have only magnitude is called a scalar quantity. For example, distance, speed, etc. समझ आ गया? वेक्टर क्वांटिटी हम उसे बोलते हैं जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है. ओके, नाउ again I will repeat you the motion. You have to keep the definition of motion in your brain. When an object changes its position with the, हम इसको थोड़ा सा elaborate करते हैं, with the passage of time with respect to their immediate surroundings, then object is said to be in motion. Okay, so you have to keep this definition inside your mind, and then in any situation you have to first of all see the immediate surrounding is changing or not. If immediate surrounding is changing, with respect to immediate surrounding the position of object is changing, then that object is said to be in motion, otherwise in rest. Okay, now we will say the distance and displacement. Distance and displacement. What is distance? The length of actual path taken by any object is called distance. It is always positive. Its SI unit is meter. It is measured by odometer. Okay, now we have to see, and fifth, it is a scalar quantity because it has only magnitude. Now displacement. The shortest path between the initial and final point is called displacement. It may be
positive, negative and 0. Its SI unit is also meter. It is a vector quantity. And last, it is equal to or less than distance traveled by an object. Okay. Now, again I will repeat you. What is distance? The length of actual path taken by an object is called distance. And it is always positive. या तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा या फिर ये जीरो होगा. एंड SI यूनिट इज मीटर. इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. और इसको जो हम लोग मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम है ऑडोमीटर. एंड it is a scalar quantity because it has only magnitude. Now the displacement, the shortest path between the initial बोलते हैं starting को, initial बोलते हैं जो starting point होता है जहां से हम लोग शुरू करते हैं, and the final यानी जहां हम लोग खत्म करते हैं अपने जर्नी को, so is called displacement. इसके बीच में initial और final के बीच में जो भी shortest distance होगा उसी को हम लोग displacement बोलेंगे. And it may be positive, negative and zero. ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. एंड इट्स SI यूनिट इज आल्सो मीटर. और SI यूनिट भी इसका क्या होगा? मीटर. एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है. जैसे 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट. बट 5 मीटर मतलब कि वो हो गया आपका डिस्टेंस. बट अगर आप बोल देते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मैं 5 मीटर किधर गया था? तो पूरब दिशा में गया था. दैट इज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट हैज डायरेक्शन. एंड इट इज इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. जो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया जाता है उससे या तो ये कम होगा या उसके बराबर होगा. ओके. नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम A, then it reaches to B, then again it starts journey and reach C, then the point D. Though distance is AB plus BC plus CD. डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा इसमें क्या होगा तो आप देखिए इसका डिस्टेंस क्या होता है. इसमें डिस्टेंस हो जाएगा इसका क्या? AB प्लस BC प्लस CD. यानी जो भी एक्चुअल पाथ था उसका जर्नी का, उसका जो भी लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा. बट अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि उसके स्टार्टिंग से यानी इनिशियल से लेके और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा स्ट्रेट लाइन में वो उसका हो जाएगा यानी AD. ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट. ओके. अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा और आप इसमें डिफरेंशिएट भी आसानी से कर सकते हैं. Now we will know what is uniform motion and non-uniform motion. First of all, uniform motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, then the motion of object is said to be uniform.
And what is non-uniform motion? When an object covers unequal distance in equal interval of time, then the motion of object is said to be non-uniform. When an object covers unequal distance in equal interval of time, then the motion of object is said to be non-uniform.